share the webinar recording with you. Okay, okay, Ganeshji. Right now I'm going to share the there is okay. So I'm going to share one poll with you guys, right? So first of all, I want to know which technical analysis platform right now you guys are using. It's just for 2 minutes. So please, which platform are you using? So we will go according it. Okay. You can vote. You can vote. So I will say the result after the votings also, right? Actually, I'm looking for the technical analysis platform like charting applications. Okay, okay, I'm ending the voting now. Okay, and result on your screen right now. Okay, so most probably trader are using Ami Broker as well as the MetaTrader, right? And also few people are not using the technical tools right now, right? So technical analysis tool, first of all, useful for us, right? We have to use the technical analysis tools. Okay. So okay, let's start the presentation now. Okay. After that, actually, I have to more focused on the practical also. Okay. So we will go through with a small presentation with right now, right? So once again, welcome to RGTS Software Private Limited, right? And we are software solution provider for stock market, and we are ISO 9001 2015 certified company. Okay, and we are focusing on traders education and developing the technical tools for the financial markets. Okay. So investment into the financial market, it's subject to market risk, right? We have to follow or we have to do with the proper manner. Otherwise, it's risk of loss, right? So few thing about me, few people are new here. So I'll give them my introduction first, right? My name is Mahesh Baholia, and I am the IT professional, right? And running the software company, right, for providing the software solution for stock market, as well as I am trader and trainer, right? And around the 10 years of experience in guiding the active traders and manage their emotion part of tradings. Okay, so this is the objective of the today's event. Okay, we discuss about the trading already. We discuss the trading system basis and trading psychology rules, as well as I'll introduce the RGTS tools, like how to it useful for the financial market, as well as the for your equity and commodity trading. Okay, so I'll promise you guys today you guys learn few more few things, right? And you guys are able to apply in your day trading. Okay. So first of all, this is the hard truth of the market. In the market, there is 92% people are losers, right? So there is only 8% people are making the money from financial market, and also in 8% there is the FIIs, DIIs, bada investors. They are making more money from my financial market. As a retail traders, only 3-4% people are making the money. Okay, so most of हमें देखने मिलता है, right? People are say in financial market we are not able to make money. Okay, this is the thing. Normally people are not making the money. So what is the reason why people not making the money? So simple reason is people are not using the proper technical tools. So they are not using the any technical parameter, as well as they don't have the discipline, right? Without discipline, you guys not are able to make money from the financial market. Discipline is the first part of the market. If you go with the proper psychology, you can make the money. Okay.
Otherwise, normally we are losing money because we don't have like proper money management rules. Okay. So first of all, in the technical analysis, there is the fundamental analysis, technical analysis, right? And mathematical based model is there. So normally people are using the fundamentals. Normally we are, as a retail investor, this is not easy to identify any fundamental tools, not easy to identify like trade with the fundamental, because we are not on. Normally fundamentals is like on the depend on the company, is a line of business, as well as the like uh, everything according on the company, right? We have to like check the everything, every news and every moment of the company, and practically we are not able to judge the fundamental data properly, because everywhere what happened, कंपनी वही दिखाएगी जो वो रिटेल इन्वेस्टर एज वेल एज इन्वेस्टर को दिखाना चाहती है. तो समटाइम लाइक रिजल्ट आर मैनिपुलेटेड. ओके, बट एवरीथिंग विल बी फ्लक्चुएट ऑन द टेक्निकल्स, राइट? आपका प्राइस पे जो एक्शन आ रहा है टेक्निकली बेस्ड ऑन प्राइस, राइट? प्राइस एक्शन. सो प्राइस एक्शन पे जो भी आ रहा है फंडामेंटल से डाटा निकल के उसका जो भी प्राइस एक्शन हो रहा है मार्केट के ऊपर, इट विल बी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट ऑन टेक्निकल्स, राइट? और नॉर्मली जो लेटेस्ट जो टूल्स चल रहा है इट्स बेस्ड ऑन मैथमेटिकल मॉडल, राइट? इट विल बी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट. एक टेक्निकल्स का ही पार्ट है, ठीक है ना? बट वो एक कोरिलेट करता है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको देता है सारा डाटा जो है, ठीक है ना? पहले से जो हमने सेट ऑफ रूल्स बना के रखा है उसके अकॉर्डिंग वो आपको सिग्नल्स देगा विथ एवरीथिंग लाइक टारगेट, स्टॉप लॉस, everything is there. So we have to follow with disciplines. Okay, and every time if you are trading in the financial market, right, this thing you should know properly, right? You have to know first of all which stock you have to buy at what price, right? And what is the target, what is the stop loss, and what is the time frame. नॉर्मली हम देखते हैं ट्रेडर आर डूइंग लाइक आप इंट्राडे के लिए कोई शेयर लेते हो, राइट? एंड हमने देखा है कि उसका प्राइस नहीं आता है. ऑन दैट टाइम व्हाट वी डू, वी आर कैरी फॉरवर्ड द पोजीशंस, ठीक है ना? हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, सोचते हैं कि देख लेंगे कल क्या होता है, बट नेवर कैरी फॉरवर्ड योर लॉस मेकिंग पोजीशंस, ठीक है ना? और इंट्राडे के लिए पोजीशंस लिया है और पोजीशन के लिए लिया है, डजंट मैटर, लेकिन आपका लॉस मेकिंग पोजीशन से देन उसको कैरी करके नहीं जाना चाहिए. बहुत लोगों के पास ऐसे शेयर्स हो गए, राइट? वो लिया था तो इंट्राडे के लिए, लेकिन आज तक उसका प्राइस नहीं आया है. स्टिल शेयर अवेलेबल इन योर पोर्टफोलियो. So if you are intraday as well as if positional trading, you have to review your portfolio day by day. If you are not reviewing your portfolio, then also you are making the like mistakes. उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है. और ऑल्सो यू हैव टू नो व्हाट इज द टारगेट. जब भी आपने कोई बाय या सेल किया है, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए क्या टारगेट रहेगा और कौन से टारगेट से आपको एग्जिट करना है, ठीक है ना? You have to use the stop loss order as well as the trailing stop loss is new concept. We are using the trailing stop loss. We will discuss right in next few minutes about the trailing stop loss also, and what is the time frame. If you're following the technicals, so every chart is work on the time frame. You have like 5-minute time frame, 15-minute time frame, as well as the daily time frame, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे आगे गाइड करता हूँ कि कौन सा टाइम फ्रेम कब यूज करना चाहिए और कौन से स्टॉक पे यूज करना चाहिए, ठीक है ना? तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा स्टॉक लेना है, क्या प्राइस से लेना है, टारगेट क्या लेना है, स्टॉप लॉस क्या लेना है, टाइम फ्रेम क्या लेना है, राइट? सो ऑलवेज लाइक पूरा मार्केट को ट्रेड करने का ट्राई मत करो. यू हैव टू सिलेक्ट योर फेवरेट स्टॉक जिसमें आप डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है ना? पहला रूल है कंटिन्यूटी मेक द मनी, राइट? आप कंटिन्यूटी बनाएंगे मार्केट में, देन यू कैन मेक द मनी, अदरवाइज प्रॉब्लम कर सकता है, राइट? ठीक है ना? सो ऑलवेज आपका स्टॉक, फेवरेट स्टॉक का लिस्ट बनाओ, आप उसको एनालाइज करो, आप उसके ऊपर थोड़ा होमवर्क करो, उसके बाद नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड प्लान करो कि कौन से स्टॉक में बाय जाना चाहिए, सेल जाना चाहिए, ठीक है ना? उसके साथ साथ कुछ मनी मैनेजमेंट रूल्स है, जैसे कि आपका कैपिटल कितना यूज होना चाहिए एवरी एंट्री. उसके साथ साथ जो आप एंट्री बना रहे हो ऑलवेज सेम क्वांटिटी से बनाना चाहिए, आइदर वो प्रॉफिट में है या नुकसान में, ठीक है ना? समटाइम व्हाट वी डन, हम क्या करते हैं, अगर लॉस मेकिंग पोजीशन होगा उसके ऊपर बड़ा पोजीशन लेंगे, प्रॉफिट जिसमें आ रहा है वो छोटा पोजीशन होगा. जस्ट एन एग्जांपल, जिसपे प्रॉफिट आया वो ओनली 500 शेयर था, जिसपे नुकसान आया वो 1500 शेयर था, ठीक है ना? तो इस सिनेरियो में कभी भी आउटपुट नहीं निकल सकता है, ठीक है? सो यू हैव टू नो, ऑल्सो यू हैव टू, ये चीज आपको आपके डेली ट्रेडिंग में आपके क्राइटेरिया में होना चाहिए, ठीक है ना? राइट?
So technical analysis का content का बात करें तो यहाँ पे there is 200 plus indicators is there, oscillators is there, ठीक है, RSI है, Bollinger Band है, MACD है, CCI, ROC, stochastic, lot of indicators is there. As a retail trader, we are not able to follow the technicals also properly because every indicators have the different rules. ठीक है ना? Some people are saying if above RSI above 70 is overbought, right? So few people are start buying after RSI cross the 50. So there is the different rules with the different traders. So we have to make our own setup, right? Also there is the volume. Volume is the most important parts of the technical analysis. So we today discuss more about Gantt frame, Gantt square, and Fibonacci retracement, right? Also price pattern is there, divergence is there. There is a lot of contents in the technical analysis. Also, what is the mathematical base model, right? ठीक है ना? So हमने बात किया mathematical base model क्या होता है, right? Why we have to use the mathematical base model? Because mathematical base model is simple to understand. Everything मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से वर्क करता है. Everything I'll guide you today. ठीक है ना? Also easy to find stop loss, easy to find target 1, 2, 3, right? Also easy to understand the avoidable trades, easy to grab perfect trades, right? No need to expert knowledge like CA, MBA, CS. Also no need of expert technicals. क्योंकि हमने पहले से जो रूल्स बनाया है उसके टेक्निकल्स वर्क करेगा, ठीक है. सो एवरी टाइम स्टॉप लॉस भी वहीं पे होगा जहां पे टेक्निकल्स का होता है. एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटिव और वहीं पे होगा प्रीवियस साइकोलॉजी लेवल्स पे या वही, ठीक है ना. सो ऑल्सो राइट वी मूव ऑन द टाइम फ्रेम. सो व्हाट विल बी व्हाट इज द टाइम फ्रेम रिक्वायर्ड इफ यू आर डे ट्रेडर्स, राइट. सो 1 to 10 minutes chart is enough for you. If you're BTST traders, 15 to 30 minute chart enough for you. Most of script, right? So there is the criteria. अगर script का बात तो above 300 का कोई script size है, then 15-30 minute chart is okay for for the intraday also. अगर 5 to 10 minutes chart is okay for intraday. If script size is below 300, ठीक है ना, तो intraday के लिए भी हमें 15 मिनट से 30 मिनट्स का चार्ट लेना पड़ेगा, right? Also as a positional traders you have to use the hourly charts, medium term investor daily charts, and long term investor weekly charts, right? And this is the time frame adoption dependency in the survey of the market. So more and more people are using 1 minute to 5 minute time frame, right? Also people are using hourly and daily time frame for trading, right? So we have to choose according to our requirement. So time frame is simple, right? Higher the time frame has the higher risk, right? Lower time frame has low risk, more trade and more profits, right? And the day trading, what is the advantage of the day trading? So this is the advantage of the day trading. Like there is zero overnight risk, increased leverage, profit in any market direction. You will be your home boss, right? You can trade from homes. You can trade from anywhere in the world. So no need to employ anyone. No need to make anything, right? No need to sell anything. No need to find customer. Everything is there. Small overheads, extremely small PC, internet softwares, right? Also flexible hours, right? Free time, take day off. Market will always be there again tomorrow, right? And no limit to your income. So this is the advantage of the day trading. Also, there is a lot of risk behind the day trading, right? So we have to understand risk also. So what will be the risk? Every time is there. Your risk is your stop loss, right? So without stop loss, also your loss is your risk. Okay. So never trade without stop loss. Also, what is the day? What will be the this is the day trading tips. Okay. So do not expect to become the expert day trader right away. Right? It takes considerable times. You have to practice. You have to afford to learn ropes, right? Also paper trade use करना चाहिए. You have to use the paper trade. Also there is the lot of simulated trading website, right? NSE Pathshala is there. You have to practice.
on the virtual trading, right? After before entering in the real trading. Also आपका ट्रेडिंग टेक्निक से आपको कुछ ट्राई करना है नया स्ट्रेटेजी, नेवर इन्वेस्ट द रियल मनी, टेक द पेपर ट्रेड, राइट? आप एक्सेल मेंटेन करो, मेंटेन योर जर्नल, उसके ऊपर देखो क्या आउटपुट निकल के आता है, ठीक है ना, राइट? ऑल्सो एलिमिनेट द फियर, लाइक लूजिंग ऑफ द फियर एक रहता है, राइट? लॉस होने का डर रहता है, तो ऑलवेज ऐसा ही पैसा मार्केट में लाओ जिसकी आपको नियर फ्यूचर जरूरत नहीं है। वी लाइक ऐसा पैसा है कि जिसकी नियर फ्यूचर जरूरत है, लोन लेके ट्रेड कर रहे हैं, दोस्त से लिया है, लाइक डिफरेंट वेज से वी गेट द मनी। सो हम उसको बोलते हैं स्क्रेड मनी। आप कभी भी स्क्रेड मनी से प्रॉफिट नहीं बना सकते, इट विल बी प्रॉफिटेबल रेयरली, राइट? सो ऐसा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट मत करो जिसकी आपको नियर फ्यूचर जरूरत है, ठीक है ना? सो ऑलवेज लिमिट योर लॉस, यूज द स्टॉप लॉस ऑर्डर, राइट? लॉस लिमिटेड करो, स्टॉप लॉस यूज करो, राइट? So also there is the introduction of our trading systems. Also you can ask in the chat, right? You have any query, you have any like query, then you can ask in directly in chat, right? Okay. So this is the first view of our RGTS version 8. This is the mathematical based model, right? And everything will be calculative, target, stop loss, everything. You can enter with the target, stop loss. We have to like also indicators is there, ठीक है ना? तो ये आप देख सकते हो, उसके साथ साथ आप ये टूल से लाइक 7 इंडिकेटर्स जो हमने कैलकुलेट किया है, राइट? ये इंडिकेटर्स इज देयर। सो मैं आपको पूरा आपको प्रैक्टिकल्स भी करेंगे, वी मूव ऑन द प्रैक्टिकल्स, राइट? ऑल्सो देयर इज द ट्रेड आइडेंटिफायर एंड ट्रेड कंफर्मेशन टूल्स, राइट? सो वी follow with the trade confirmation and trade identification, we get the proper outputs, okay? Also we are using the scanner, right? We are using the scanner, we get the like हमारे पास कोई पहले से decided stock है and we want alerts whenever buy or sell will be generated, so you get the everything will be alert on the alert whenever buy will be generated, sell will be generated, ठीक है ना? सो उसके साथ साथ डायरेक्टली आप ट्रेड कर सकते हो, लाइक नेवर मिस द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, ओके? एंड आल्सो यू कैन एक्सप्लोर द मार्केट, risk is in bullish today, risk is in bearish today, right? And we are able to find the overall trend of the market, okay? Also I'll guide you on the practical on the Cambrilla levels directly, okay? So like what is the Cambrilla level? First of all, so Cambrilla pivot point formula है, ठीक है ना? वो रीडिफाइंड है, वो क्लासिक पाइवट पॉइंट फॉर्मूला को रीडिफाइन किया है ना? और डेवलप्ड बाय निक स्टोट, राइट? निक स्टोट जो है वो वेरी सक्सेसफुल बॉन्ड ट्रेडर्स, और उन्होंने एक इसको बेटर बनाने के लिए फिबोनाची नंबर्स का यूज किया है लेवल कैलकुलेट करने के लिए, एंड इट विल बी गुड, राइट? हम डिस्कस करेंगे आगे कैम्ब्रिला लेवल्स को भी किस तरह से यूज कर सकते हैं राइट हैंड ट्रेडिंग सिस्टम के साथ, ठीक है? सो देयर इज द डिफरेंट सिनेरियो, कब बाय जाना चाहिए, कब सेल जाना चाहिए विद द कैम्ब्रिला, हम ये प्रैक्टिकल्स में देखते हैं। सो राइट नाउ आई एम स्किपिंग दिस स्लाइड्स, ओके? आल्सो वी आर यूजिंग द ग्रांड स्क्वायर ऑफ 9, राइट? सो ग्रांड स्क्वायर ऑफ 9 like widely used by traders and the like well known trading concepts है, ठीक है? बट इश्यू इज लाइक ट्रेडर आर उनको पता नहीं है ज्यादा, ट्रेडर्स like few things is there in market freely available, right? So with that thing we are not able to do GAN properly, ठीक है ना? तो always अगर GAN का एक पूरा setup है, कुछ rules है, we have to follow them. After that we are able to make money, we are able to follow successfully the GAN lines, right? So एक geometry जो shapes है, ठीक है ना? उसको ही WT GAN अच्छी तरह से यूज किया, square of 9 है, square of 144 है. So we will discuss about the GAN square of 9 also today. So there is the Fibonacci retracement also is there, right? So Fibonacci level retracements are despite by taking high or low points on the chart. So मैं correctly आपको आज गाइड करूंगा correctly Fibonacci retracement को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है ना?
सो इट्स डिपेंड ऑन ट्रेंड, ठीक है। आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगा प्राइस रिवर्सल आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है ना, राइट। ओके, सो we move on the practicals today. You can ask, you have any query about the presentation today? Okay guys, right, so yeah, tell me. Okay, so sure, we move on the practicals directly. So I'm going to share my screen, right? So it's take the few minutes. Right, so everywhere, everything you have to know properly before the trading. So you guys getting my? Okay, sure. Okay, we move on the practicals directly, right? So, today, like I'm going to share the first of all which tool we are using right now, ठीक है ना? So this is the RGTS version 8 and everything will be calculative. हमने जैसे डिस्कस किया है, ठीक है ना, मैथमेटिकल बेस्ड मॉडल, जो सारा चीज है इसमें है कि इंडिकेटर्स को लेके आपका जो एंट्री तक का है, एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिकली कैलकुलेटिव। सो हमें वो बार बार हमें देखने नहीं जाना है मेरी जीरो के ऊपर आया या नहीं, RSI 55 क्रॉस किया नहीं, राइट। वो सारा लाइन, सारे इंडिकेटर्स हम अगर चार्ट पे डाल देंगे, इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू आइडेंटिफाई, ठीक है ना। सो विद द like RTTS systems, everything will be calculative. So first of all, we are using the few rules to trade, right? We have the few rules. We are following the yellow dotted line as a trailing stop loss, right? And trailing stop loss, it will be always will be on the psychological levels. So कहाँ पे रहेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस? एज अ इंट्राडे ट्रेडर व्हाट वी डन, हम क्या करते हैं, अगर ये एसएससी का चार्ट है, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, अगर बाय करना है, राइट, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है? सिंपल स्ट्रेटेजी, वी हैव सिंपल स्ट्रेटेजी। एज अ मैं अगर कोई कॉमन स्ट्रेटेजी आपको डिस्कस करूं तो कैसा होता है एज अ ट्रेडर, हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं कि जैसे ही प्रीवियस, एज अ डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी है, राइट। अगर मुझे बाय जाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा कि कब प्राइस प्रीवियस डे के क्लोज को, या अगर क्लोज ऊपर है तो या तो हाई, राइट, कि प्रीवियस डे के हाई को कब क्रॉस करता है। अगर प्रीवियस डे को हाई को क्रॉस करता है, लाइक प्राइस एट द हायर हाई, नॉर्मली वी प्लान टू बाय, राइट। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? प्रीवियस डे का कोई साइकोलॉजिकल लेवल होगा, प्रीवियस डे का ओपन होगा, प्रीवियस डे का क्लोज होगा, ठीक है ना। तो आपका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं हम मेंटेन करेंगे अगर आप स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो, ठीक है। सो ऑल्सो प्रीवियस डेज क्लोज इज द लाइक वेरी गुड सपोर्ट, राइट। अगर कोई स्क्रिप्ट प्रीवियस डे के क्लोज के नीचे बंद आता है और लगातार एक दो दिन प्रीवियस डे के क्लोज से नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तो टेक्निकली वो स्क्रिप्ट राइट डाउन हो सकता है। सो ऑलवेज एसआई को लेवल्स हम पकड़ते हैं। उसके साथ साथ जब सेल कर रहे हैं तो हम वेट करेंगे प्रीवियस डे के लो के नीचे ट्रेड करें, वी कैन गो सेल आवर स्टॉप लॉस ओपन हाई लो क्लोज कहीं पे भी जो भी लेवल्स आ रहा है नियर बाय, उधर हम स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हैं। तो सेम एज द आपका हमारा जो सिस्टम्स है आरजीटीएस वर्जन 8, सेम थिंग पे ट्रेड करता है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन ले रहा है, ठीक है ना।
आपको स्टॉप लॉस ऑलवेज जब भी आप बाय कर रहे हो आपको एक इनिशियल स्टॉप लॉस है, ठीक है ना, यू गेट द टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, स्टॉप लॉस एवरीथिंग, राइट, ऑन द लाइक डायरेक्टली ऑन द मैसेज बोर्ड। उसके साथ साथ वी हैव टू चेक द इंडिकेटर्स, अगर बाय कर रहे हैं, राइट, वी प्लान टू enter on the second candle, so everything we have to identify first if your indicators is okay. Normally we have given the color code because color code is easily identifiable, right? Always आप identify कर सकते हो, उसको देख सकते हो कि green है तो buy, red है तो sell, ठीक है ना। So if 6 or 7 indicators हमें bullish support कर रहे हैं, we can go buy, right? As well as indicators, if everything green, this is a good trade, we have to go buy, okay, with the proper target. So target is there, trailing stop loss is there, ठीक है ना। So always हम एंट्री लेंगे, उसके बाद हम मेंटेन करेंगे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। if you follow the strictly if you follow the trailing stop loss, right, you get easily you get the 1:3 risk reward ratio, ठीक है ना। So just an example हम बाय कर रहे हैं, उसके साथ साथ we are taking the support of the 200 bar EMA. 200 bar EMA is a very good tools to identify the trend in the intraday as well as the positions, ठीक है ना। So yes sir, see, if we are like considering one price, right, so like there is the actual price is different, like signal is generated on 50-minute chart, that time actual price is different, yes. See, buy it 100, when buy it, if नॉर्मली इतना कोई गैप रहता है 10 to 15 पॉइंट का अगर गैप रह रहा है बाइंग एंड आपका जो एंट्री, सी एंट्री विल बी फ्लेक्सिबल, राइट, बिकॉज थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। अगर आप ऐसा सोचते हो इट विल बी 15 पॉइंट, राइट, देन हमें बाय नहीं करना चाहिए, वी हैव टू अवॉइड द ट्रेडिंग, वो शेयर वो सौदा हमें नहीं लेना चाहिए, वो सिग्नल हमें नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। सो ऑलवेज आप 1 रुपी 2 रुपी का गैप रह रहा है इज ओके, वो भी 115 रुपए का स्क्रिप्ट तो 1 रुपया बढ़ा है तो 1% ऊपर है, ऐसा आप मान लेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए थोड़ा हायर टाइम फ्रेम लो, आपको एक अच्छा एक मूव मिल सकता है, ठीक है ना। सो ऑलवेज ऐसा कोई ट्रेड आ रहा है तो यू हैव टू अवॉइड द ट्रेड, वो ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ऐसा बड़ा कोई गैप हो जा रहा है। नॉर्मली 1.2 पॉइंट इज इट ओके विद द 15-minute चार्ट, 30-minute चार्ट, ठीक है ना। सो ऑलवेज एक प्राइस हम पकड़ते हैं, कभी भी जो भी प्राइस हम चार्ट पे डिस्प्ले कराते हैं सब लोगों का एंट्री उधर से हो जाए वो जरूरी नहीं है, इट विल बी डिले, और थोड़ा बहुत डिले होता है कोई इश्यू नहीं है, राइट। वी आर यूजिंग द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और आपको वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम नहीं करेगा। ओके, सो लाइक this is the basic with the version 8, right. Also we are normally more focused on your subscription, like we more focused on your training, after that your subscriptions, okay, right. Also this is the like version 8 for aggressive traders who want to like swing, who want to done the swing trading as well as the intraday में एक दो ट्रेड आप कर सकते हो, या तो स्विंग करा सकते हो आपके स्टॉक को, तो आप छोटा छोटा एक मूवमेंट्स अगर आपको पकड़ना है then version 8 is okay. And also few trader are want to trade like आपको पोजिशनल्स भी जाना है थोड़ा बहुत, और लाइक एंट्री भी थोड़ा जल्दी मिलना चाहिए, ठीक है ना। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इफ वी हैव टू डू द पोजिशनल्स, राइट, तो हम क्या करेंगे, आवरली पे ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। आवरली का ट्रेंड देखेंगे, जस्ट एन एग्जांपल, बिलो द व्हाइट लाइन वी गो सेल ओनली ट्रेड, अगर ऐसा कोई बीच में ट्रेड आया वी कैन अवॉइड इजीली, बिकॉज वो ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड बना है, तो आप इजीली इसको फिल्टर आउट भी कर सकते हो, ठीक है। सो अगर अवरली जाना है, समटाइम क्या होता है, अगर आप अवरली पे ट्रेड कर रहे हैं, यू हैव टू वेट टिल कैंडल क्लोज, राइट। सो 1 घंटे का एक कैंडल रहेगा, वी हैव टू वेट टिल 16 मिनट्स, सो उसके बाद हम एंट्री लेके जाएंगे। तो समटाइम लाइक वी आर नॉट एबल टू वेट, सो एज अ वो हमारा साइकोलॉजी, वैसे वेट करना चाहिए, लेकिन अगर प्रॉब्लम हो रही है, सो वी हैव द सॉल्यूशन आल्सो विद द, you can get the lesser trend on the we have the another tools, right. So in the trend power you get the less trade, like ये आपके सामने है, ठीक है ना।
like hourly pay we get 1 or 2 trade, but on the trend power only one trade is there in SSC. Okay, we take the example of any another script. There is the Nifty in hourly, right? So almost it will be generated 500 point around profit. Still in bearish, right? So this is a trend power. Normally, see, trend power मैं आपको explain कर रहा हूँ. इसके साथ साथ एक general thing भी मैं आपको explain कर रहा हूँ, ठीक है ना? Okay, sure, sir. Yeah, Bala sir. Sure. Okay, we go with English also, right? So we have to know what is the successful breakout or breakdown, right? हमने बहुत बार देखा है, बहुत बार सुना है. What is the successful breakout or breakdown, right? So every time either आप कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो आपके चार्ट के ऊपर, या फिर आप कोई ट्रेंड लाइन बनाया है आपने, ठीक है ना, या फिर आप मूविंग एवरेज भी ले रहे हो, कुछ भी है, राइट? सो वी आर यूजिंग द लाइक क्लाउड फॉर द बाइंग और सेलिंग डिसीजन ऑन द ट्रेंड पावर. बट मैं सक्सेसफुल ब्रेकआउट क्या होता है वो समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना? सो ऑलवेज अगर सपोज कि आपने कोई ट्रेड लिया है, सपोज हम इसको लाइन को लेते हैं कि बिलो द रेड लाइन देयर इज द सेल सिग्नल, अबव द ब्लू लाइन देयर इज द बाय सिग्नल, राइट? अगर रेड लाइन के नीचे कोई स्क्रिप्ट ट्रेड कर रहा है, वी गो सेल ऑन द ट्रेंड पावर, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ब्लू लाइन, राइट? स्टॉप लॉस विल बी डायनेमिक, वो ऑल्सो चेंज होता रहेगा आपका, ठीक है ना? सो यहाँ पे अगर बात करें तो आपका सेल एंट्री इधर आया है, राइट? बट वी हैव टू वेट टिल ब्रेकआउट. ब्रेकआउट में क्या होना चाहिए? ये ब्रेकआउट नहीं है, ये कैंडल्स में यहाँ पर जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से आपको डिस्प्ले हो. Right, what is the breakout? So this is not successful breakout. This candle is close below the red line, right? ये कैंडल्स, मेरा जो कर्सर जहाँ पे है, कैंडल क्लोज तो हुआ है रेड लाइन के नीचे, बट ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं है बिकॉज इसने स्टिल रेड लाइन को टच किया है, या तो उसका ओपन जो है रेड लाइन के ऊपर है यहाँ पे, राइट? तो हमें ऐसा इसको ब्रेकआउट नहीं समझना चाहिए. दिस इज द सक्सेसफुल ब्रेकआउट, राइट? जो हम कभी भी एंट्री करने का ट्राई करते हैं अबाउट 200 बार, ये मैं जस्ट एन एग्जांपल, वी हैव टू गो बाय, तो उस टाइम पे लाइन को टच किया, देन डजंट मीन दिस इज द सक्सेसफुल ब्रेकआउट. अगर उसका इसी तरह से कोई ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक वो कैंडल पूरा का पूरा उस लाइन के नीचे ही बंद हुआ है और ओपन भी हुआ है, देन दिस इज द सक्सेसफुल ब्रेकडाउन, राइट? वी हैव टू गो सेल. आप उसको क्लोज हो जाने दो, थोड़ा एंट्री डिले होगा, बट इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर यू. आपका वेब सोर्स बहुत कम लगेगा, ठीक है ना, राइट? सो ऑल्सो विद द ट्रेंड पावर यू कैन इजिली एबल टू ट्रेड द 5 मिनट्स. You can get the good output. Okay, this is the 5-minute chart, right? We are get the successful breakout here. We get the successful breakout, and this is the close market trade. Like it will be generated around 3:30. So we are not able to trade. But on the second day, right, on the 23rd, we are able to enter. Right? We have to check what will be the risk reward ratio, what will be the stop loss. After that, we have to enter. Okay. Also, we have to avoid the last market trades. Okay, so we have to avoid these both are trades. Okay, so you get you get the good output. Okay, so you can also ask me in the chat if you have any issue or if you have any query with this, right? Okay, so also we are like we move on the Cambrilla, right? What is the Cambrilla levels and what is the plus point of the Cambrilla? So first of all, plus point is you can, like अगर कोई sideways market है, you can easily able to find out the sideways trend, right? Also वही swing हो रहा है, उसी में अगर buying selling करना है, you can able to buy or sell, right? So इसी चीज को like किस तरह से हम RGTS से यूज कर सकते हैं. So just an example, ये ट्रेड आपका बना था, आपका ट्रेड बना था 22 तारीख को, 22 फेब को, आफ्टर 3:30, लाइक 3 बजे के बाद बना है, राइट?
आफ्टर 3 PM, सो हम यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। आफ्टर दैट वी हैव टू गो बाय ऑन द सेकंड डे, ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए, सो सेकंड डे हमें बाय जाना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ऑलरेडी बाय का ट्रेंड सेट था, आरजीटीएस का ट्रेंड कल का चल रहा है, ठीक है ना, ये बाय ऑलरेडी था यहाँ पे। सो अगर सेकंड डे हमें बाय जाना है, जस्ट एन एग्जांपल, स्टॉप लॉस विल बी बिगर। So what we take the advantage of the Camarilla. Camarilla always based on the open. आपका open कहाँ पे हुआ है वो बहुत मायने रखता है। Just an example, ये जो निफ्टी ओपन हुआ है Camarilla लेवल्स के अकॉर्डिंग, और लाइक हम किस तरह से इसी को बाय कंटिन्यू या कैरी करके जा सकते हैं। सिंपल है, आपका उस स्क्रिप्ट का ओपनिंग देख लो, ठीक है ना। ओपनिंग देख के वी हैव टू चेक द ओपनिंग कहाँ पे हुआ है। यहाँ पे सिनेरियो है, देखो जो लाइन बना है, अगर S5 और S4 के बीच में ओपन हुआ है, ठीक है ना, एक सिंपल सिनेरियो लिया। अगर S5 S4 के बीच में ओपन हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाय जाने के लिए। बाय जाने के लिए वी हैव टू गो बाय। तो पहले तो प्राइस S4 के नीचे स्विंग करना चाहिए, और उसके बाद S4 को अगेन S4 लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाना चाहिए। सो इट विल बी लाइक यहाँ पे इतने में ये कंसोलिडेट हुआ है। लाइक जस्ट एन एग्जांपल, ऑलरेडी हमारा बुलिश था एंड वी हैव टू गो बाय, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो स्टॉप लॉस है, ठीक है ना, वो अगर बड़ा आ रहा है स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे, कोई भी S3 के नीचे का स्टॉप लॉस लेके वी कैन गो बाय अबव द S4 ऑल्सो, ठीक है ना। उसके साथ साथ सिस्टम का जो भी टारगेट आ रहा है, स्टॉप लॉस आ रहा है, यू कैन एंटर अकॉर्डिंग इट। Yes, sir. You're looking for the buy sell system that could do trading without your interruptions. Yes, sir. You are able to do, right. You are able to do the buy automatically buy and sells with the systems, right. So this our system also able to trade, right, automatically. No need any user interruptions. But practically, like you can do as a your individual interest. You can buy, there is a lot of plugin is there, if you are using like Nest traders, right. All or normally all broker are providing the plugins. It will be easily connected with the Ami broker platforms, right. Or whenever buy or sell will be generated, Ami broker will be fire the order to your terminals, right. So you can easily able to buy and sell. But first of all you have to लाइक चेक द सिस्टम मैन्युअली। लाइक पहले दिन से आप उसको ऑटोमेटिकली पे नहीं चढ़ा सकते। यू हैव टू चेक एटलीस्ट 3-4 months इफ योर सिस्टम इज प्रॉफिटेबल इन मैन्युअल ट्रेडिंग, ठीक है ना। उसके बाद आपको वो कैरी करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, सो ये भी आप एक ध्यान में रखो ऑलवेज, राइट। उसके साथ साथ एक कैमरेला पे हम लाइक डिफरेंट एक सिनेरियो देख लेते हैं, कैसे जाना चाहिए बाइंग और सेलिंग पे, ठीक है ना। सो ऑन द ऑलवेज लाइक Camarilla normally look at the opening price of stock, future, commodity, currency. Okay, so always if you are using the Camarilla, ठीक है ना, अगर Camarilla यूज कर रहे हैं तो आपका ओपनिंग प्राइस बहुत मायने रखता है। देखो एक मैंने स्टैंडर्ड रूल्स बनाया है, उसका मतलब नहीं है वी हैव टू फॉलो दिस स्टैंडर्ड रूल आल्सो ओनली, राइट। आप यू कैन मेक योर ओन रूल्स, नॉट एन इश्यू, यू कैन मेक योर ओन रूल्स। आप जहां से भी प्राइस स्विंग हो रहा है, ठीक है ना, कोई भी लेवल है, इधर S3 के नीचे ट्रेड करके अगेन S3 को क्रॉस करता है, इट विल बी बेनिफिशियल कि आपको बाय जाना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा H1 या तो L1 के नीचे, ठीक है ना। तो आप इजीली आपके अकॉर्डिंग उसको स्विंग करा सकते हो, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट। अगर आप कुछ इसी तरह से कोई ट्रेडिंग सिस्टम या तो ट्रेडिंग स्टाइल बना रहे हो, ठीक है ना, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू कैन मूव ऑन, राइट। सो ओके, सो लाइक we go with the scenario 1. if price is open between S3 and L3, प्राइस कहां पे ओपन होना चाहिए, between S3 और L3. We can check any script and the like opening between S3 and L3.
Just a minute. Okay. We check on. Yeah, there is the price, right? But also it will be bullish. ये bullish signals है, ठीक है ना? मैं आपको एक check if you have any stock. Yeah, there is the opening price, right? This is the Ambuja Cement. Price will be open between S3 and L3. ठीक है ना? On we discussed the camera purely, right? So scenario one is price will be opening between L3 and S3. So what we have to do? We have to go first scenario. We have to check the for buy. हमें buy करना है तो क्या करना पड़ेगा? We have to check, right, for long. Wait for the price go below the L3. Then when it's move back to L3, right? Then buy. We have to buy, right? And target 1 will be H1, target 2 will be H2, and target will be S3. So this is the perfect example of the this like scenario. Price open between those levels, price will be move below L3, right? And again it will be crossed the L3, right? So what we done after the moving the L3 above the वो cross करना चालू किया, we wait for the safer side. It will be cross above the L2 or L1, right? अगर L2 cross कर लिया, still price will be moving above the your levels. What you have to do? You have to buy. Your stop loss will be L4, ठीक है ना? Buy के लिए ये scenario अच्छा है. We have to go buy. हमारा टारगेट क्या रहेगा? टारगेट 1 रहेगा H1, S3, S4, S5. So on the Ambuja Cement, Cambrilla work perfectly with this scenario, right? No, it's simple. It's simple, sir. Right? We have to practice it. If you are not practicing, according me, right? मेरे लिए it will be like simple because normally I have practiced it more than like it lots of time, right? So if you practice it, it will be easily identifiable. Easily you can able to enter in the buy or sells. There is no complications, right? Also if you are correlate with the systems, right? RGTS systems, then it will be more easy. Okay. So this is the scenario one. यही scenario पे when we have to go sell, अगर price, if price will be goes above, like price will be goes above S3 and again it will be reverse, right? कैमरिला क्यों यूज होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि ये कैमरिला लेवल्स को हम इवन इन द लाइक चॉपी मार्केट वी आर एबल टू स्विंग, राइट? अगर साइडवेज है या तो उसी रेंज में प्राइस मूव कर रहा है, स्टिल वी आर एबल टू स्विंग और उसको स्विंग करा के स्विंग ट्रेडिंग में हम यूज कर सकते हैं, राइट? और उसका पूरा रिवर्स कंडीशन हो जाएगा कि S3 के ऊपर से क्रॉस करके नीचे आया, वी हैव टू गो सेल, S4 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है ना? डोंट वरी, लाइक मैं शेयर करूंगा, वीडियो भी आपके साथ शेयर हो रहा है. या हाउ वी सिलेक्ट स्टॉक, ओके? सी लाइक यू आर नॉट एबल टू लाइक अगेन एंड अगेन लाइक सारे स्टॉक इस तरह से फाइंड करके फिर रैंडम स्टॉक को लेके ट्रेड कर ले, ऐसा नहीं करना है. यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट स्टॉक. अगर आपके पास लिस्ट है, यू हैव लाइक जस्ट एन एग्जांपल 10 to 15 स्टॉक, तो उसी स्टॉक में अगर कोई क्राइटेरिया मैच कर रहा है, ठीक है ना, तो उसी को आपको ट्रेड करना चाहिए एवरी डे. अरुण सर, लाइक दिस इज द आंसर फॉर यू, राइट? इफ एवरी डे वी आर फाइंडिंग द डिफरेंट स्टॉक, then we are not able to make like we are not able to trade properly because अगर कोई unknown share ले लिया, every day we like make the loss with the Cambrilla also. So first of all you have to select the stock, also you have to apply the Cambrilla on those stock only every day.
Also we are able to like scan the like our stock, ठीक है ना. ये पैरामीटर जो है ना कि हमने ये लिया, कोई हमें सर्च करना है, वी आर एबल टू स्कैन लाइक S3 और L3 के बीच में कौन सा स्टॉक ओपन हुआ है, वी आर एबल टू स्कैन ऑन द AMI broker. It will be possible. Okay, so another scenario is like price open between S3 S4, we have to go long, right? So above S4 long, stop loss will be S3. Below S3 we have to go short, right? Stop loss will be S4. We have the perfect examples in this scenario in Nifty. Price will be open in between S5 S3 S4, right? प्राइस हमारा यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है ना. सो वी हैव टू गो बाय. हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं S4 के ऊपर, ठीक है ना. S4 के ऊपर ट्रेड किया, वी हैव टू गो बाय. और स्टॉप लॉस रहेगा बिलो S3, यही से हम बाय करके वेट कर सकते हैं, ठीक है ना. और स्टॉप लॉस विल बी बिलो S3 और योर टारगेट इज S4 S5, right? After that you can take the like another traditional pivot level for your आपका टारगेट लेने के लिए यूज कर सकते हो. Otherwise you can use the trailing stop loss or you hold your positions, right? So normally every time on the target you can book your partial profit only. Okay, never book the like one first target, second target, never book the like 100% profit. Always ऐसा करो कि आपको एटलीस्ट सेकंड टारगेट या थर्ड टारगेट पे पार्शियल क्वांटिटी बुक हो और टिल रिवर्सल, वो स्टॉक जब तक रिवर्स नहीं करता है, ठीक है ना. सो कैन शो सम बैंक स्टॉक एज दे आर टू लो एट दिस टाइम लाइक Axis, ICICI. Yes sir, yeah we move on. Also those stock normally on the low, right? It will be swing on those levels only, like Axis Bank. Again there is the like criteria will be, it will be bullish on the Axis Bank. There is the HDFC Bank, right? See this thing, it will be continuously, it will be consolidate around this zone, right? So ये प्राइस अगर हमारे क्राइटेरिया में ओपन हुआ है, स्टिल अगर if we go buy, right, our stop loss will below the L4, but we not make the nothing make on the 23rd on the HDFC Bank, but it will be possible, right? But you can easily you can able to enter, right? आप buy कर सकते हो if you buy above the L3, S1 your first target, so easily normally you get the first target. So also sometimes it will be fail, so you have to check first, right? Camrilla you have to check first on your stock on the historical data also. So यहाँ पे historical data आपके पास रहेगा, ठीक है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल उसको चेक कर लो, वो आपकी स्क्रिप्ट के आपको अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. इफ नॉट वर्किंग ऑन योर स्क्रिप्ट then you have to avoid the Camrilla also, ठीक है ना. मैं यहाँ पे दोनों साइड लाइक आई डोंट वांट टू प्रूव एनीथिंग लाइक ये काम करेगा ही करेगा, ठीक है ना. बट आई हैव टू शो द स्ट्रेटजी किस तरह से वर्क करता है. उसके बाद उसके ऊपर हम पेपर ट्रेड करेंगे, उसके ऊपर हम वर्चुअल ट्रेडिंग पे जाएंगे, उसको हम टेस्ट करेंगे. आफ्टर दैट इफ यू फाइंड कि ये काम करता है, देन यू हैव टू गो विद दिस थिंग, अदरवाइज यू हैव टू अवॉइड दिस थिंग्स, राइट. सो देयर इज द डिफरेंट रूल्स. 3-4 क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे दिया है, राइट. ऑल्सो प्राइस अगर L3 L4 के बीच में ओपन होता है, इफ वी गो लॉन्ग राइट अबव L3 वी हैव टू गो बाय. स्टॉप लॉस L4 नीचे रहेगा. एवरी टाइम यू हैव टू मेक रूल्स. आप उसको फाइंड कर सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो. बट कोई और ले लिया आपने, सपोज मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले लिया है, ये तो कोई और टूल्स का सपोर्ट ले लिया है, तो इजी हो जाएगा आपको कैमरिला पे ट्रेड करना, राइट. क्योंकि जस्ट एन एग्जांपल, प्राइस इज अबव द 200 बार EMA ओनली, देन ऑलरेडी ये बुलिश है, तो हम ट्राई करेंगे कि कोई बुलिश लेवल को ट्रिगर करे, राइट, और उसके अकॉर्डिंग बाय जाए. तो ऑलवेज कोई एक स्ट्रेटेजी पे, उसको किसी ना किसी स्ट्रेटेजी पे मेरे अकॉर्डिंग आप उसको कोरिलेट करो, ठीक है ना, तो कोई इश्यू नहीं हो सकता है, राइट. ऑल्सो यू आर एबल टू यूज लाइक फिबोनाची नंबर्स ऑल्सो आप यूज कर सकते हो. आपको उस लाइक
उसके साथ साथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज कर सकते हो, फिबोनाची फैन यूज कर सकते हो. There is different tools. Also, we guide you, not an issue from our side, right? So like Fibonacci available directly on the AmiBroker, right? So you can identify like आप अगर हाई से लेके लो से लेके हायर पॉइंट को ड्रॉ करते हो, आपको इजीली रिवर्सल्स के लेवल्स कहाँ कहाँ पे उसका एक रिवर्सल पॉइंट आपको दिख सकता है, उसका एक आगे का एक व्यू मिल जाता है. ठीक है ना. अगेन जस्ट एन एग्जांपल, मैं यहाँ से एक हाई पॉइंट से ड्रॉ कर रहा हूँ लो पॉइंट के लिए, राइट. सो आपको ऊपर के भी ये लेवल्स आपको मिल जाएंगे. तो ऑलवेज अगर आपको रिवर्सल आइडेंटिफाई करना है कि फिबोनाची के ऊपर, सो करेक्टली ड्रॉ करने का है एक ऑलवेज लो टू हाई फॉर लाइक सेलिंग का लेवल्स कौन कौन सा मिल रहा है उसके लिए लो टू हाई ड्रॉ करो, हाई टू लो ड्रॉ करो बाइंग के लेवल्स के लिए. ठीक है ना. या तो ऊपर के लेवल्स कौन सा रहेगा उसके लिए हाई टू लो, नीचे का कौन सा लेवल्स रह रहा है या तो डाउन में कहां तक जा सकता है उसके लिए लो टू हाई. सिंपली यू कैन क्लिक ऑन द लो पॉइंट एंड ड्रैग योर कर्सर टू हायर पॉइंट. ठीक है ना. एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल्स है. इट्स वर्किंग लाइक 0% रिट्रेस करके वो आ रहा है. फर्स्ट पहला लेवल रहेगा उसका 38%, राइट. इट विल बी 1825, right. If HDFC Bank trading the below the 100 like 1825, it will be goes at the 2218 until 1808 levels. Okay. Also just an example में इसी को ये थोड़ा हमारा स्विंग अच्छा होना चाहिए. ये छोटा स्विंग है ये ओके है मैं आपको गाइड करने के लिए. ठीक है कि जस्ट एन एग्जांपल एक स्विंग हमने देखो उसके लेवल्स भी उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे, राइट. कि हमने हाई से लेकर लो के लिए ऊपर का लेवल्स कौन सा आएगा बुलिश, राइट. यहाँ से तो 0% उससे तो स्विंग हो रहा है. ठीक है. सो योर फर्स्ट 32 लाइक ऑलरेडी इट्स ट्रेडिंग अराउंड योर 38 to 61%. इफ ये प्राइस जो है वो योर 100% से ऊपर मूव करता है, राइट. And then you get the like another levels 1837 like 127% का लेवल से 161% का लेवल है. ठीक है ना. तो ऑलवेज फॉर लाइक सेलिंग लेवल्स लो पॉइंट टू हाई पॉइंट, फॉर बाइंग लेवल हाई पॉइंट टू लो पॉइंट. ठीक है ना. Okay, Tata Motors, you want to check the Tata Motors, not an issue. So what is the query on Tata Motors? Yeah, Sunil ji, what is the query on Tata Motors? Which thing we have to apply on Tata Motors, right? Sunil ji, what is your query on the Tata Motors? See, you can able to apply like all strategy on your selected script. There is no limitations. ठीक है ना. आपको सिर्फ उसको पहले एनालाइज कर लेना है. दिस इज द रूल्स. अगर वो एनालाइज किया है उसके इंटरप्रेट किया है उसके बाद अगर लगता है कि दिस थिंग दिस स्टॉक, देन यू हैव टू like follow, you have to find. Arunji, like no, with the RGTS tools there is no repaint, no repaint, right. अगर ये repaint हो सकता था, ये repaint हो सकता था, right, then I am easily repaint the indicators और ये signals आपको दिखता ही नहीं. ठीक है ना. अगर ट्रेंड पावर का बात करें, there is the buy,
अगेन सेल, अगेन बाय, अगेन सेल्स। 11 बजे से लेके 2 बजे तक 4 घंटे में 4 सिग्नल्स, ठीक है ना। इफ it will be fixed, right? And or no any tools repainted with the RGTS. Uh, yeah, sure, Ganesh ji. Also, we are planning to do webinar in live, right? There is nothing like we have to show the strategy, and easily in the live also we are able to identify there is no issue, right? Okay. So first of all, like Arunji for you. So we are the repainted indicators. The not normally repainted indicator never show the false signals, right? But there is the false signals. Okay, and we are easily avoid the false signals because मैंने आपको बात किया, ठीक है ना। I have already like मैंने बात किया कि एक सक्सेसफुल ब्रेकडाउन होना चाहिए सेल के लिए। अगर इसमें ऐसा कोई कैंडल हमें मिलता तो वी कैन गो सेल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सो वी हैव टू अवॉइड दिस सिग्नल्स। ये बाय भी अवॉइड करना पड़ेगा। रीजन इज कि हमें ब्रेकआउट नहीं मिला ब्लू लाइन के ऊपर, सेल के लिए रेड लाइन के नीचे ब्रेकआउट मिलना चाहिए। हाँ, इसका स्टॉप लॉस लगा है, दिस इज द स्टॉप लॉस, राइट, इन द टाटा मोटर्स। ओके, this is the sell signals, and like we correctly get the like breakout over here also. This is the all breakdown point, we are able to sell, right? So okay, you can like so you can easily able to track, right? In the also on the version 8 there is the few like you get the swing, you get the alert everywhere on the swing, right? Or you have to identify अगर indicators is supporting our trade, right? अगर support मिल रहा है then we can go sell or buy. Yes, with the Fibonacci levels, how to buy or sell. Yeah, Mentos ji, I'll explain you again. On the Fibonacci levels, not an issue. Okay. See, first of all, okay, मैं यहीं पे एक एग्जांपल ये टाटा मोटर्स पे ले लेते हैं हम, ठीक है ना। देखो, पहले तो आपको फिबोनाची लेवल्स ड्रॉ कैसे करना है। You have to draw. First of all, you have to identify higher point and lower point. This is the higher point, right? This is the lower point. Scenario दो हो सकता है, you have to go sell or buy, right? If like मैंने अगेन बात किया था, अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपका इंडिकेटर्स कोई जस्ट एन एग्जांपल ईएमए लाइन लिया है वो बुलिश है, उसके अकॉर्डिंग बाय है, तो आप क्या ट्राई करेंगे, बाय लेवल आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे, ठीक है ना। सो मैं दोनों साइड का लेवल्स आपको बता देता हूँ कि किस तरह से ड्रॉ करना चाहिए, राइट। कि आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया लो पॉइंट, तो पहले तो लो से हाई जब आप ट्रेड करोगे ना तो आपको लो के लेवल देगा, वही स्विंग से, ठीक है ना। हाई से जो स्विंग होकर नीचे आ रहा होगा तब वो लो का लेवल देगा, ठीक है। अगर मैं यहां से ड्रॉ कर रहा हूं हाई तक, द हाई, तो आपको इजीली सेल के लेवल मिल जाएंगे। अगर आपको बिलो द 38% 50% के नीचे कोई स्विंग करता दिखे, ठीक है ना, राइट, सो यू कैन सेल। आपका कोई टूल्स डिफरेंट टूल्स ले लो सपोर्ट में, यू कैन सेल उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अगर आप 38% के नीचे सेल कर रहे हो, योर स्टॉप लॉस अराउंड 0%, राइट। आपका अगर 361 से सेल कर रहे हो नीचे, योर स्टॉप लॉस विल बी 364। इसी चीज को अगर हम बुलिश के लिए बात करें तो, क्योंकि यहाँ से एक हमें हल्का सा रिवर्सल दिख रहा है, ठीक है ना, कि ये लेवल से वापस एक लो बना के ऊपर जा रहा है, तो हम अगर इसी को करंट सिनारियो पे लास्ट कैंडल पे देखें तो हम क्या कर सकते हैं, राइट। वी मूव ऑन। like high to low, okay,
राइट। आई टू लो पे हमने देखा, देखो दिस इज द, यहाँ से हमने एक रिवर्सल है और दो कैंडल अभी बना हुआ है यहाँ से, ठीक है ना, एक लो बना के। अगर हमें बाय जाना है तो एक सिनारियो है, यू कैन गो बाय फ्रॉम हियर। आपका कोई प्रीवियस लेवल्स का आपको सपोर्ट ले लेना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई उसके पहले का कोई स्विंग है, वहां से आप उसका स्टॉप लॉस लेके यू कैन बाय ओवर हियर, देयर इज नो इश्यू। देखो एवरी स्क्रिप्ट का डिफरेंट डिफरेंट रिस्क रहता है, ठीक है ना। सो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको थोड़ा और श्योर हो जाना है तो क्या करना पड़ेगा कि ये फिबोनाची नंबर्स 38% को क्रॉस करके ऊपर निकले, ठीक है ना। आफ्टर यू कैन बाय 50% उसने क्रॉस कर लिया, यू गेट इजीली, यू गेट द लाइक 61% 100% लेवल्स, ठीक है ना। सो यू कैन अंडरस्टैंड और स्टिल एनी क्वेरी मेंटोस जी? Okay, so we are easily also Fibonacci frame is there, right? आपको 45 डिग्री का एक एंगल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बट लाइक वी नो, ज्यादा मैं आपको टाइम नहीं लूंगा उस पे, बट वी कैन एबल टू ड्रॉ Fibonacci फ्रेम आल्सो। एक आपको ट्रेंड लाइन आपका एक ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना, 45 डिग्री का ट्रेंड लाइन आपके चार्ट पे। आफ्टर देन यू कैन ड्रॉ द Fibonacci फ्रेम आल्सो, राइट। फिबोनाची एंगल्स भी बोलते हैं, राइट। सो राइट नाउ आप देखिए ये 360 ये जो लेवल्स है, राइट, वैल्यू इज 358, राइट। अब आगे का लेवल्स उसके अकॉर्डिंग अगर स्विंग किया तो वापस लाइक ऊपर आपको स्विंग करता दिखेगा, 61 है, 63 है, राइट, 64 है। अगेन अगेन ये फ्रेम पे आप उसको अगेन आप अगेन एक दूसरा भी आप अगर ले लिया, राइट, 45 डिग्री का एक दूसरा एंगल ले लिया, इजीली जो आपका ये पॉइंट है ना, ये भी ये एक मेजर लेवल्स आपका बन रहा है, वो इजीली यू आर एबल टू आइडेंटिफाई। बट फैन फैन को थोड़ा समझने में यू हैव टू प्रैक्टिस इट, राइट। इन लेट मी ट्राई कि कोई नया वेबिनार करेंगे, कोई डेडिकेट रखेंगे फैन टूल के ऊपर ही, गैन टूल्स के ऊपर फिबोनाची पे, ठीक है। सो yes sir, yeah Ganesh ji, yes sir, right. See GAN, what is the GAN fan, like GAN angel? Always you have to identify the, first of all you have to identify the trend, you have to identify the trend, like GAN fan जो है ऑलवेज चार्ट पे ट्रेंड के 45 डिग्री पे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। एक में पॉइंट ले लिए, टाटा केमिकल्स का चार्ट है, ठीक है ना। अगर इस पे लगाता हूं मैं तो आप एक बार एक ओवरऑल एक आप देखो कि कहां पे 45 डिग्री बनता है, अराउंड दिस इज द अराउंड अकॉर्डिंग मी, राइट। ये अराउंड 45 डिग्री का लाइन होगा, राइट। सो ऑन एन एवरेज अगर आप 45 डिग्री का अगर लाइन एक ड्रॉ किया है, आप उसी पे एक आप पेन ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। आपका जो मिडल लाइन है ना, गन फैन ले लो और आपका जो मिडल लाइन है ना वो 45 डिग्री पे जाना चाहिए। आप उसको खींच सकते हो लाइन को, कोई इश्यू नहीं है आपको आगे के, राइट। अगर आपने थोड़ा लाइन को स्ट्रेच किया है तो इजीली, राइट। सो इसके ऊपर का ये स्विंग किया है 45 डिग्री लाइन हमने जो ड्रॉ किया उसके ऊपर प्राइस भी ट्रेड कर रहा है। सो आगे के लेवल हमें कौन से मिल सकते हैं, इजीली गेट this point, right, around value of 712। if again आगे वो मूव करता है आगे के उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू आगे का भी डिस्प्ले करता जाएगा फैन पे। यू हैव टू एक बार एक लेवल्स आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर आपको होल्ड करना है, ठीक है ना। आपको देख लेना है, देखो ये स्विंग किया है, यहीं पे ये लेवल्स है, ठीक है ना। दिस इज द लाइन, यहाँ पे लाइन को लाइन के पैरेलल चला है, आफ्टर दैट move down, right. So this is the
अकॉर्डिंग इट यू आर एबल टू, अगर इसके नीचे अगर आपने 45 डिग्री का लाइन ड्रॉ किया, उसके नीचे ट्रेड करता है तो कहाँ पे आ सकता है, ये प्राइस इसके अराउंड आ सकता है, 708 आ सकता है, राइट, 704, you get the 700 like that. Okay, so you have to practice the like Fibonacci fan. Always take the 45 degree line. This is the important thing for you on the Fibonacci fan, right? See, also let's move on the RGTS tools. With the we have the scanner and so we are able to find the buying or selling entry easily. Okay, okay, so this is the alert scanner. With the alert scanner, we are able to find the whenever buy or sell will be generated. Okay, just an example. This is the 5-minute time frame. Okay, so अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें कोई अलर्ट्स लेना है, it will be auto repeatable. So एक बार हमने auto repeat लगा दिया, it will be scanned automatically. With the alert, you get the entry like whenever buy or sell will be generated. Easily you get the alerts. Oh, maybe something wrong with my Ami broker. Just a minute. Right, so there is a scanner. Right, let me check the. Okay, 5-minute time frame. Scan. Right, so whenever buy or sell will be generated, right, we get the alert, and according it, we have to plan. This is the buy entry, right? In the live market also, we are able to scan, and we have to check if buy is there. This is the confirmed buy according to our rules, right? Above the 200 bar EMA, indicators are supporting our buy. We have to go buy here. Okay. So also we are using the Explorer. So you are able to find the trend. Just an example, I am taking the hourly time frame. So what happened exactly on the hourly time frame with the wall script. So we are able to find like overall which trend is running in the market, right? According to my scanner, right? There is the mix. Normally few script are trading in the bearish. Also bullish is there. Also we are able to find the score like higher number of score, there is the out of 7, right? If out of 7 like there is the 5. Okay, lesser score will be script are weaker, higher score will be for the strong script. This is the bullish. Okay, so there is the 7 score in the SSC. So in the hourly there is bullish will be started on these candles, right? According it, if we get the signals, we go buy. Okay. So there is the scanner. Also, you can get the alerts on your mobiles. Also, the way I am using the one another strategy, it will be SEO scan, right? So in the morning, right, there is the proven strategy. Open equal to high, open equal to low, right? So I'm using this strategy also in my selected stock. If my stock is open at the low, I'm considering the bullish. If also I'm getting the signals from my systems, I straight away to go buy, right? I no need to like check the news and anything. If my script is open equal to high and I'm getting the signals from my systems, I have to go sell only. Okay, so easily you are able to find and you're able to scan everything on the Ami Broker platforms. As well as with your tools, with your trading platform, you have to check you are able to make the strategy or not, right? So with our set of rules, we are easily able to identify the stocks. Like it will be better than technicals, right? It will be always correlated with technicals, but it will be better, right? Everything will be like
हमारा टाइम बहुत कम जाएगा, बाइंग सेलिंग लेना है, कुछ भी कर रहे हैं तो, ठीक है ना? ओके, सो लाइक ऑलमोस्ट लाइक 1 hours and around 20 minutes will be gone, right? So right now I'm going to stop, I'm still 10 minutes here, I'm finishing the session over here. Okay. So you can ask me if you have any query. We more 10 minutes here, right? So I'm stopping this my screen. And again we move on platform. Okay, so okay, you can ask me, you can tell me if you have any query right now. Yes sir, this is my WhatsApp number, 84879055. You can directly contact me on WhatsApp, right? If you have any query. Yes sir, you have a query about the Explorer. Okay, not an issue. I'm going to share again my screen. See, yeah, right. Okay, can you getting my screen? Yes sir. See, on the Explorer, there is the different exploration is there, right? So this is the one of the Explorer SEO scan. Okay, and another like all-in-one Explorer. So all-in-one Explorer is what? Like there is a different indicators is there. Just an example, I have selected my 5-minute time frame. So on the all-in-one Explorer, I'm getting the output of 5-minute time frame. So what will be the indicator position on those particular 5-minute candles, right? So I have to explore it. Okay, so according to the 5-minute candles, there is this is the scenario. What is the for the Bollinger Band? This is the natural. Short moving average is the bullish in the ABB, right? Mid moving average will be bullish. Long moving average MACD will be bullish. Aron indicator will be bearish. Aron is the one of the indicators, right? Also stochastic is bullish and RSI will be neutral. So overall score will, out of 7, score will be 6. So overall this script will be bullish, right? So we are able to explore the script, we are able to explore the stock. So we no need to check one by one all stock, right? So any another query? Yeah, with the Explorer, Matthew sir. So also you can share you can share your query with my email address, right? So I'll answer your query one by one. If you have any like recorded video demand, right? You can. Yes sir. See, for the registration cost, there is a normally this is the like I'll go. You can check the registration cost on the website also, right? Okay, in the services there is the systems cost is, yeah, this is my India number, sir. This is my India number, and I'm from India, right? And located at the Ahmedabad, Gujarat. This is my India number. Okay, there is the different price details are available for the like train power as well as the version 8.
Okay. Yes, sure, sir. Right. You all guys are get the call from the my team for the live demo, and we are installing the live demo on your computers. Okay. Right. So also we have the different tools, right? So in the 1 hour session, I'm not like 1 or 5 hour session, I'm not able to explain everything. So you can contact directly on my customer care number, right? You can contact directly to support team also, right? Okay. Yeah, sure, sir. You get the call back. All guys, you get the call back from my team. Okay. So, okay, guys, thank you for watching me. And yes, sure, sir. We done the demo as well as the we are doing the webinar, and we day by day increasing our flow to of the webinar, right? So my intention is to guide you guys, right? If I make the mistake so in the explanation, so if right, so then sorry for that. I try my best to you guys, like मेरा इंटेंशन है आपको राइट नॉलेज दूं, ठीक है, ऑन द एवरी पॉइंट. इफ अगर कोई मिस्टेक रहा है, you can directly share with me on my email address. Okay. Yes, sir. Everything will be included. Yes, sir. Sachin ji, everything will be included. You can, for more detail, you can contact the support team. Not an issue. You can contact support team. Okay. Okay. Thank you for connecting with RGTS. Yeah, thank you, sir. Thank you. Right, and we will improve the day by day presentation also. Right, and our my first intention is I have to guide you guys. Right. Okay. You can suggest me any if you want to learn any new topic. Right. Let's learn together. If you guys discuss the topic with me on my email, you can suggest, right? We guys we analyze the thing like on the market as well as on the different market situation, right? My first intention is I have to like make you guys the knowledgeable, as well as I have to test the different strategy. Like our ultimate goal is we have to make the profit from market. Okay. Thanks once again. Okay. So right now I'm finishing this event. Thank you guys. Thank you very much.